So file directories. Now in last session, as I said, we have discussed about the files. Now today we are having the directories. Now we know that directories keep the track of the files, isn't it? Also we can say that in many system directories works as the files itself. मतलब वहाँ पे directory ही as a file, मतलब data storage का एक main we can say main term वहाँ पे directory ही काम करती है. And in our system, to store the huge number of the files on the large capacity of the disk, we use that. Okay, so in order to manage this all the files which are present in the huge amount, we need to organize, we need the organizational or organized scheme, isn't it, to store this all the files. And organization this organization of your files or the directory or files is called as the directories, right? So these are the few, we can say, there are the three types in which we can organize our directories. The first one is the single level directory system, second is the two level directory system, and third is the hierarchical directory system. Now this type of the questions will be asked in your university examination for short note as well as for explanation for 6 marks or for 10 marks. Explain your file directories or how you can manage or how you can organize your directories, explain in detail. So in that case you have to draw a diagram for this, and you need to explain each and every point. Now in single level directory system, if you will observe, simply we will be having one root directory जो एक main directory रहेगा. This will be the main, also this is the very simplest directory structure, right? So in this directory structure, one directory will be containing all the files. Okay, one individual directory will have all the files, and this single directory is also will be called as the root directory. Now in earlier systems we know that only one person will be using one system. In that case, uh, it is very easy to manage कि मेरे पास सिर्फ एक ही directory है और whatever the files are present inside that, those are mine. वहाँ पे ज़्यादा complex कुछ था भी नहीं, कुछ minimum file limited files ही रहते थे. So to manage that it was very simple. Also if we will talk about the easiness, मतलब if I want to search any file, if I want to search any file from the current directory, then I can retrieve my file very easily क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही directory है और सिर्फ limited files है. Then I can easily retrieve that file, I can easily identify my own file, isn't it? So if you here observe in this diagram, in the single directory we have the different files available here. And now here these two A files are related or आर ऑफ ए यूजर, मतलब ए यूजर के दो फाइल्स हैं यहाँ पे. मान लो कि तीन यूजर्स इस डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं एंड दे हैव देयर ओन फाइल्स प्रेजेंट इन दिस. सो बी यूजर का यहाँ पे एक फाइल है, सी यूजर का यहाँ पे एक फाइल है, एंड ए यूजर के यहाँ पे दो फाइल्स हैं. So because of the very simple nature, it is easy to retrieve any file, easy to search any file. But one thing is there, if you want to store the lot of the data या फिर आपको बहुत सारे files store करने हैं, then it will become very clumsy कि मतलब एक बार अगर आप सर्चिंग शुरू करो तो आपको एक ही डायरेक्टरी में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, isn't it? If you have a search option, then that is a different part. But if you have a very कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फिर आप ऐसे ही सब कुछ रख दिए हो बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्ट्रक्चर आपने उसको ठीक से नहीं रखा है, बस ऐसे ही सब एक साथ डाल दिया. आपने ओएस की भी फाइल्स एक साथ रख दिए. इफ यू हैव कीप्ट योर माइक्रो प्रोसेसर फाइल्स ऑल्सो, मतलब सारे असाइनमेंट आपने और सबको नाम दे दिया असाइनमेंट 1 2 3 इस तरीके से. देन and if you are storing all the files in a single directory, so it will be very difficult for you to identify your own file from that, isn't it? So this is the single level directory system. And we can say simply we can say कि इसका limitation ऐसा कह सकते हैं, if single user has a huge number of files which is kept in the single directory, then it will become difficult to remember the name of each of the file, right? Then there is a second method which is called as two level directory system. Now diagram से ही पता चल रहा है, two level directory means in a root directory, every user will be having his own directory. Okay, उसका एक intended, उसका एक special अपना अपना directory रहेगा. And in that each directory every user can save, every user can store their own files. Okay,
which will only belong to that user itself. So whenever any user wants to access any file, that user has to search in that current directory, मतलब उसके खुद के directory में ही इसको search करना है. There is no need to search in entire root directory or no need to search in entire system. So सिर्फ अपने अपने ड्राइव में अपने अपने डायरेक्टरी में जाके अपनी फाइल ढूंढो, दैट विल बिकम ईजी. मतलब इससे ईजी पड़ जाएगा, सिंपल हो जाएगा. नाउ वन मोर यहाँ पे एक लिमिटेशन ये भी आता है, जैसे कि इफ two different users are giving the same name to the file, then it will also again becomes very complex. जैसे मान लो अभी मैं डाउनलोड्स में आपके असाइनमेंट जब चेक करती हूँ या आपके राइटअप्स अगर चेक करती हूँ, देन आई यूज टू डाउनलोड दैट, एंड वेन एवर इट इज डाउनलोडिंग, तो होता क्या है कि जैसे किसी ने लिखा रहता है असाइनमेंट 1, सबने ही नाम यूजुअली दिया लेता है कि असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 1 असाइनमेंट. सो वेन एवर आई एम डाउनलोडिंग दैट, तो वहाँ पे कॉपीज जनरेट होते हैं, असाइनमेंट 1 ब्रैकेट में 1, असाइनमेंट 1 ब्रैकेट में 2, मतलब जितने कॉपीज रहेंगे वैसे ब्रैकेट्स में आते जाता है. बट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट नेम कि ये वाला असाइनमेंट किसका है, एंड ऑल द फाइल्स आर सेव्ड इन द सेम फोल्डर, दैट सेम डायरेक्टरी दैट इज डाउनलोड वाली, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सेम नाम से अब ये फाइल कौन से यूजर की है या फिर कौन से स्टूडेंट की, ये पहचानना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट. सो दैट विल बिकम easy in this two level directory system if I'm keeping the separate user directories, and if I'm keeping the files of that particular user into that directory itself, then it becomes easy to find out that files, और फिर थोड़ा organized रह जाता है. ठीक है, this is the two level directory system. Now this is the third one, which is hierarchical directory system. In this hierarchical simply we will be having a tree structure जहाँ पे multiple levels भी हो सकते हैं. Here we will be having the root directory. Each user will have their own directory, separate special directories. This is the level of user directory, and in this user directory now user can store their own files. Also user can create their own subdirectories also, right? So C user can create a new directory as a C. Now again in this C two directories are created, and now in this directory I am storing my files. So this is the tree structure. So ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे से you can store your data in a very proper way, and it is very easy to find out the path of your file as well as to retrieve any file. It will become very easy. Okay. Now whenever you are using your tree structure to store the file or to manage or to organize your directories, um, or we can say when the file system will be organized as a tree of directories, then your file should be accessed by specifying the path name. Okay, path name is very important whenever you are searching for that file. So this there will be the two types that can be done by two types. One is the absolute path name and the second one is the relative path name. Now what is this absolute path name? So simply it will consist of the path from the root directory to the file. Okay, whenever you are mentioning your file name, and by using the absolute path name, then it will be mentioned by the root directory. This slash is nothing but the root directory. Okay, इस root directory में you have a user नाम का directory. After that, in that user directory I have one more directory, one more folder which is called as my folder. Okay, and in that my folder I have now one file which is called, which the name of that file is my file. Okay, so whenever you want to retrieve this, or the meaning of this file simply is your root directory contains the subdirectory user, your root directory contains the subdirectory user, which is in turn contains a subdirectory my folder. Okay, and now at the end this my folder will contain the my file as a simple file. Okay, so you have to retrieve this file by using this absolute path name in this way. Okay, you can notify like this. Now the second one is the relative path name. Now relative path name is simply we can say it consists of the path from the current working directory to the file. Okay, so for example, if you are present currently in this path, मतलब आप मान लो रूट में यूजर में माई फोल्डर के अंदर इफ यू आर प्रेजेंट, योर करंट डायरेक्टरी इज हियर, आप यहाँ तक हो,
my folder tak. You are present in this my folder directory. Okay, so simply you can access your file by writing your file name itself which you want to access. Okay, that is my file. You can simply retrieve your file by simply writing the name of that file. So this is the relative path name. So you can access, there will be the two type of the to mention the path, that is absolute path name, and another one is the relative path name. Now we can perform operations on the directories, um, like you might have already executed some commands like mkdir, rmdir, right, rmd. This type of the commands you have already executed in, जैसे हार्डवेयर वर्कशॉप था उसमें भी कुछ कुछ कमांड वाला भी एक प्रैक्टिकल था हमारे, right? So in that also you might have executed this type of the commands. So lot of operations can be performed on the directories, depend upon the operating system, उसके जो commands notation है that becomes change. बट ये सारे ऑपरेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डायरेक्टरीज पे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, टू डिलीट अ डायरेक्टरी, ओपन डायरेक्टरी. We need to, if we want to read the content of the directories, then you need to first of all run the command of open directory. Then after reading, you simply have to close the directory. You can rename the directory, link and the unlink the directory. Link and unlink मतलब होता है कि जैसे आप अगर किसी एक डायरेक्टरी को लिंक करते हैं, देन इट विल बी, और वी कैन से योर फाइल विल बी अपीयर इन मोर देन वन डायरेक्टरी, तो उसको लिंकिंग कहते हैं. एंड इफ already you have linked your file to different two directories, then you can unlink that by using the unlink command. Okay, so these are the operations which can be performed on the directories also. Okay, so the next is the IO management, that is input output management. See, if we whenever we are saying our system का सबसे पहला मतलब मेन काम क्या होता है, the main job of our computer is input output process, input output and the processing, ये manage करना, right? So in many cases हम ये भी कह सकते हैं कि मेन जॉब उसका इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग है, और मतलब डिपेंड करता है कि कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है. बट टू मैनेज दिस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें वहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए. whenever we want to access, जैसे कि कीबोर्ड, if I want to use this keyboard, I want to press any enter key or anything, so there should be the linking should be done, the driver should be installed. If I want to give a printer, if I want to give a print to my print through my printer, तो वो जो मान लो कि मेरे पास अभी ब्रदर्स का प्रिंटर है घर पे, तो मैं वो एक्सेस कर रही हूँ, देन इट हैज द ड्राइवर्स ऑफ दैट प्रिंटर शुड बी इंस्टॉल अर्लियर. कॉलेज में जाऊंगी तो वहाँ पे एचपी के प्रिंटर्स हैं, सो वहाँ पे मुझे कुछ और ड्राइवर चाहिए, सो दैट प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड टू माई लैपटॉप. So these can be managed. The job of this managing input output devices is also handled by the operating system itself. Okay, so wait a minute. Okay. फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, ऐसे ही रख देती हूँ. Okay, so as I said, your operating system is also required to take your application input output request. Okay, जैसे मैं print का command, if I am executing the event to print the page, okay, so it will take an application input output request and send it to your particular printer, or we can say send it to any particular physical device. It is not about the printer only. आप माउस ले लो, आप कीबोर्ड ले लो, आपका या कनेक्टेड कोई भी डिवाइस है, पेन ड्राइव है, जो भी है, सो it will send that request to the physical device. Then it will take whatever the response will be coming back from the device, and it will send it to your application. Okay, so this IO devices, this your input output devices will be divided into the main category, into two categories. The one will be the block device and the another is your character device. अब block and character में फर्क क्या है? Simply your block device is
like um, in which your driver will communicate by sending entire block of the data. Okay, जैसे कि मान लो आपका हार्ड डिस्क है या फिर आपका यूएसबी कैमरा है. So what this type of the application, what they do, it simply communicate uh, through the blocks, okay, block of the data. And in the character devices, the it, they are the applications, or we can say your character device is one with which your driver will communicate by sending and simply by receiving a single bytes, okay, single characters, या फिर हम कह सकते हैं कि single octets. 1 byte equals to 8 bit, right? So हम उसको octet भी कहते हैं. तो octets will be transmitted, okay. And जैसे कि if you have heard about the serial ports या फिर आपके parallel ports, या फिर आप कह सकते हैं कि sound card जो आपके रहते हैं, they work on the basis of character devices. Fine. Now the next we have device controller. Okay. Now simply device, if you know the device driver, okay, device drivers are also simple software, right? Software modules that can be plugged into your operating system to handle your particular device, right? So your operating system will take we can say एक टाइप का हेल्प ही लेता है from the device drivers to handle all type of the input output devices. And your device driver will work like we can say, जैसे हम कहते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूजर एंड द मशीन के बीच में, वैसे ही आपका डिवाइस कंट्रोलर क्या है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन योर डिवाइस एंड योर डिवाइस ड्राइवर. ओके, सो लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब we can take this as an example. Now if you will observe this diagram, in this diagram it is connected by simply a single bus. This is the bus interface. इंटरफेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट जैसे कि स्विच, आपका हब स्विच हो या हब हो, रिपीटेड हो, गेटवे हो, वेन एवर दे आर कनेक्टेड इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो आपका एक पैटर्न रहता है आपके जो सिस्टम से आपके बाकी के डिवाइसेस जो कनेक्टेड रहते हैं इन द नेटवर्क, उसको हम सिंपली टोपोलॉजी कहते हैं. कि जिस स्ट्रक्चर में आपके सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, the nature the pattern in which they are connected to each other, that pattern is called as the topology. Okay, तो यहाँ और वहाँ पे वो जो connected रहते हैं, they will be connected by using the different type of the network connectors. जैसे यहाँ पे ये बस इंटरफेस है. बस इंटरफेस मतलब क्या होता है कि ये जो आप सिंगल लाइन एंड में देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द बस इंटरफेस. Through this bus interface, all the CPU, then your memory and all the remaining input output devices like monitor, keyboard, USB drive and the disk drive, these all are connected through this bus driver. अब बस ड्राइवर का एक स्पेशलिटी क्या होता है कि इट इज यूनिडायरेक्शनल, या फिर आप कह सकते हो कि सारे जो आपके ट्रांसमिशन हो रहा है, entire data which will be communicated in between these all the parts will be communicated through this bus. मतलब डेटा अगर सीपीयू के थ्रू डिस्क ड्राइव में जा रहा है, then it will be transmitted from here, and if once it is traveling then no one can access this bus. Okay, मतलब कोई और अगर दूसरे दो में कम्युनिकेशन चल रहा है, देन नो एनी अनदर पेयर कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस बस. तो एक टाइम पे एक ही चलेगा. सो डिवाइस ड्राइवर्स विल बी इंस्टॉल्ड for this particular devices or input output devices, and through this it can be accessed by any of the user. Okay, जो भी होगा यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर बीच में एज ए मीडिएटर रहेगा. नाउ द नेक्स्ट इज सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस आउटपुट. नाउ सिंपली हमें इसका मतलब समझना है कि क्या होता है. इन योर सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट स्कीम, while your CPU execution will be matlab happening, while CPU execution is CPU will be performing an execution for the process, then at that time your input output should be stopped. Okay,
वहां पे आपका एक टाइम पे एक ही काम करेगा। जैसे हमने देखा है ना, कोई प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट के लिए पूछता है, कोई उसको पेन ड्राइव चाहिए, उसको कोई प्रिंटर चाहिए, उसको कोई स्कैनर चाहिए, देन इट दैट प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, राइट। और उस टाइम पे आपका सीपीयू क्या करता है, जो भी रेडी क्यू में दूसरा प्रोसेस है उसको फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए ले लेता है, बट जो करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है दैट विल बी स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, है ना। तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। बट इन asynchronous input output, your we can say input output devices will proceeds simultaneously, या फिर हम उसको कह सकते हैं concurrently with your CPU execution। मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक चल रहा है तो उसकी वजह से वो रुक जाएगा। दे बोथ विल वर्क एट द सेम टाइम, कंकरेंटली काम करेंगे। दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस एंड asynchronous। देन sorry, communication to your input output devices। Now in this we are saying that कि मतलब इधर से उधर इन्फो पास होता है सीपीयू की तरफ से इनपुट आउटपुट की तरफ, फिर मेमोरी के थ्रू, बट देयर शुड बी or we can say your CPU should have a way to pass the information from the input output devices or from input output to the CPU, isn't it? मतलब दोनों की तरफ information pass होने के लिए कुछ तो वहां पे बीच में वे चाहिए ना। So here we are having these three approaches to communicate with the CPU as well as with the devices. The first one is your special instruction input output, second is the memory mapped IO, and the third one is the direct memory access. Now अब इसमें क्या क्या होता है, अलग अलग पैटर्न में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, डेटा जो एक्सेस होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। Now in this special instruction input output, you are we can say simply this will use the CPU instruction, okay, it will use the CPU instructions uh, which are specially we can say, or which are specifically made for your controlling input output devices, okay. And this instruction typically will allow data to be sent to, we can say, input output devices, or to read, if we want to read the data from the input output devices also, then also, मतलब एक separate ही section उसका रखा जाएगा, कुछ special instructions वहाँ पे will be reserved for that, okay. And if you will talk about the memory mapped input output, if you can observe this diagram, so memory mapped में क्या रहता है कि if we are implementing memory mapped input output, if we are using memory mapped input output, your same address space, your same address space will be shared by your memory also as well as input output devices also, okay. And your device will be directly connected to your मतलब कुछ मेमोरी, आपका मेमोरी के अंदर, आपके मेन मेमोरी के अंदर सम पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं बफर स्पेस विल बी रिजर्व्ड, okay, buffer space will be reserved for the input output devices. And whenever they want to retrieve the data, when they want to read the data, or when they want to store the data, so input output devices will simply use that buffer space from the memory, and they will use and they will access and they can communicate to the CPU, okay. मतलब पहले क्या था कि input output devices को have to tell CPU, then CPU is going to manage an entire thing and then it is going to retrieve, right? But now input output devices can simply directly access, directly use the buffer space from the memory, and they can communicate with the CPU directly, okay. Now the third case is direct memory access, that is DMA। DMA related short note आता है, मतलब अलग से ही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Now in this DMA, like we can say, जैसे कि हमारे कुछ डिवाइसेस होते हैं which will be operate which will operate in a slow, मतलब as compared to the other one, कुछ आपके डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थोड़ा स्लो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि कीबोर्ड्स है, सो व्हाइल इफ यू आर यूजिंग द कीबोर्ड्स, इट मे पॉसिबल दे विल जनरेट एन इंटरप्ट, ओके, सीपीयू के लिए वो इंटरप्ट जनरेट करे, ओके। So whenever the interrupt will be generated, then each time it will be notified, it will be notified to the CPU, okay. और अगर कोई मतलब फास्ट एक्सेस वाला है
then it doesn't matter. But am I audible? Hello?